अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेरी गुड आफ्टरनून, आदाब। मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हो, सुन रहे शो सैटरडे ब्रांच। वेल, AMU के फाउंडर्स डे सेलिब्रेशन में शिरकत करने के लिए खास मेहमान इंडिया से तशरीफ लाए, जो कि फॉर्मर वाइस चांसलर रहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। आप रिटायर्ड डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। यस, इट्स एन कंप्लीट ऑनर एंड प्रिविलेज टू वेलकम लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह सर ऑन FM107। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू डूइंग सर? वेरी वेल, थैंक यू। सर, मैं पहले तो आपकी जर्नी को जानना चाहूंगी। मेरे लिसनर्स आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। आपकी जर्नी की शुरुआत कब, कैसे और कहाँ हुई, एंड हु एक्चुअली इंस्पायर्ड यू टू जॉइन आर्म्ड फोर्सेस? Fortunately, my father was in the civil service, and we had a privileged background in that he could afford to send my two brothers and myself, we three of us, to a boarding school in Nainital, where we studied, and there were a large number of people aspiring for the National Defence Academy those days. So I had made up my mind that I would wear that very elegant blazer which they used to wear and tell us stories of the escapades in National Defence Academy. And one felt that this was the right honorable profession, कि बहुत इज्जत की नौकरी है, तनख्वाह भी उस जमाने के लिए, उस टाइम के लिए ठीक थी। तो मेरे बड़े भाई तो मेरे एक साल से मेरे बड़े थे, वो तो IIT चले गए और मैं NDA चला गया, और नसीर भी हमारे साथ था। तो नसीर घर से भाग गया और एक्टर बन गया। ओके, सो भाग के एक्टर बने जी। अच्छा, क्योंकि आपने जैसे बताया कि बहुत ही अच्छे आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपके फादर वाज अ सिविल सर्वेंट जी, तो क्या इस तरह का प्रेशर आप पे नहीं था कि आप भी इसी में आए, इसी फील्ड को? नहीं, वो मेरे वालिद जो थे, वो उन्होंने हमें कभी फोर्स नहीं किया कि आप साइंस लो या ये लो, मगर हमारे सब्जेक्ट्स ऐसे थे कि साइंस और आर्ट्स दोनों कंबाइंड थे। सीनियर केमिस्ट्री का बड़ा अच्छा सिलेबस था। तो जब मैंने उनको, क्योंकि हमारे जो खानदान है जी वो फौज के साथ ही जुड़ा रहा है। मेरे दादा जो थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 37 लांसर्स में 4 साल ट्रेंचेस में रहे फ्रांस में। तो हमें बहुत ही मोटिवेशन था फौज में ज्वाइन करने का, और इसी वजह से मैंने NDA के लिए इम्तिहान दिया और सेलेक्ट हो गया। और फिर जर्नी ऐसी रही, बहुत किस्मत अच्छी थी। और दो चीज़ें ज़रूरी हैं सक्सेस के लिए, एक तो अच्छा एजुकेशन, हार्ड वर्क, और सबसे बड़ी चीज़ वालिदैन की दुआ। बहुत अच्छी। If you have parental blessings, then you can overcome a lot of obstacles without any problem. So I was blessed with all three. We had a good education and parental blessings. सर, मैंने पढ़ा कि आपने जब ये ज्वाइन कर ली, आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर ली, उसके बाद एक टाइटल से आपको बांधने की लगातार कोशिश की गई जी। सरकारी मुसलमान कहा गया आपको। सो व्हाट वाज योर अप्रोच टुवर्ड्स इट? जब आप कुछ डिसिप्लिन एनफोर्स करना चाहते हैं, तो काबू में लेना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, तो खिताब आपको यही मिलता है कि आप सरकारी आदमी हैं, आप गवर्नमेंट एजेंडा पुश कर रहे हैं। तो मेरे वालिद ने के बारे में मैंने सुना था कि शाह साहब जो हैं सरकारी मुसलमान हैं, वो गवर्नमेंट का एजेंडा पुश कर रहे हैं अजमेर में। उनकी बस कोशिश ये थी कि जितने फंड जो आ रहे थे वो ठीक तरीके से इस्तेमाल किए जाएं, एजुकेशन के लिए, लंगर के लिए। मगर लोग जो है पॉकेट करते थे, कई ऐसे लोग होते हैं। तो ये खिताब जो है मैंने पहली बार सुना कि शाह साहब सरकारी मुसलमान हैं। और उसके बाद जब मैंने किताब अपनी लाइफ के बारे में लिखी, तो मुझे ये टाइटल बहुत पसंद आया। मैंने कहा कि जो मेरी किताब है उसका नाम जो है मैं द सरकारी मुसलमान, और इसके मैंने टाइटल भी समझाया कि क्यों मैंने रखी है। क्योंकि हिंदुस्तान में सरकारी मुसलमान जो है वो आपके लोग ही कहते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट एजेंडा पुश करता है, मगर तो उसके बाद लोगों ने ये सोच लिया कि इस किताब में कम्युनल कंटेंट है, जो कि नहीं था। वो तो मेरी जिंदगी के बारे में था। मैं बहुत आई कैन से विथ कॉन्फिडेंस, एंड आई एम नॉट बीइंग a hypocrite, that I was treated very fairly right through my service.
I got what I deserved. Of course, I had to work very hard. I got what I deserved, and people thought that it had communal content. So, despite the fact that it was a bestseller for several months, but in the armed forces, it was not a popular book. For some reason, basically because of the title. My publisher told me two things. He says, General, very few people who buy books read them. They use it as an ornament. They just put it on the bookshelf. Very true. So I sort of listened to what he said. He said it must have a very catchy title and must have a very catchy cover. So it covers both. This Sarkari Musalman was a very catchy title. People wanted to know. For everyone. For everybody. Yeah. What on earth is the Sarkari Musalman, which I explained in the first paragraph, first page. And it had a very catchy cover of myself hoisting the national flag on Independence Day function in front of the historical buildings. So that is about the book. But a Sarkari Musalman is conceived by the Muslims of India as somebody who is pushing the government agenda. But that is not so. It is a total incorrect view of things. Very proud of that. Very well said. Sir Syed Ahmad Khan, he believed in bridging the traditional knowledge with modern education. That's right. So इस philosophy को कैसे resonate करते हैं आज के present educational approach के साथ? This is very, very important. You know, the Quran in one hand, and so we said the Quran in one hand and the computer in the other hand. I mean, it was very necessary that we modernize education. We started the system of having smart classrooms. We started with 10, and then our alumni were a great help. They helped us to establish almost more than 100 smart classrooms. We got a person, His Holiness the Sayyidna, as the Chancellor. And my first request to him was two things. I said, the Minto Circle School is named after your grandfather, but it is now dilapidated. You will please restore it. He says, done. And within a week, a team of engineers had come to restore that building. And I also asked him for 1,000 top-of-the-line computers. And one fine day, within 2 weeks, a whole truck with 1,000 computers landed up in the university, and we distributed them to everyone. This was the Sayyidna. He must have spent several crores on 1,000 top-of-the-line computers. So we wanted to modernize the method of teaching, and this is something which I should tell the students, that now everything is online. Harness the power of technology. And the other advantage I used to tell them is a computer cannot identify what is your race, religion or anything else. It only knows your competence. Very good. So I said, harness that, take advantage of it, and I'm very, very glad that they took to it and have done well. सर, आप वाइस चांसलर रहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के. अपने उस टेन्योर में तालीम के मौक़ों को और ज़्यादा फ़रोग़ देने के लिए, डाइवर्स कल्चर को भी फ़रोग़ देने के लिए आपने क्या स्टेप्स उठाए? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं चाहता था कि जो यूनिवर्सिटी का कल्चर, तहजीब है, वो प्रिजर्व की जाए. और मेरे वालिद के टाइम में तो मैं जो पुरानी फोटोग्राफ देखता था, वो सिटी हाई स्कूल में पढ़े थे, और मेरे पूरा ख़ानदान जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ा है. मेरा छोटा भाई भी नसीर वहाँ पढ़ा है. मैं 15.5 साल की उम्र पे NDA चला गया. हालांकि मगर ज़रूर अगर नहीं जाता तो ज़रूर मुझे मौका मिलता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने का. तो मैं वहाँ की तहजीब, कल्चर को प्रिजर्व करना चाहता था. और मुझे अफसोस बहुत होता था कि जो पुरानी फोटोग्राफ्स हैं उसमें सब शेरवानी पहने हुए. अब मैंने देखा खाली फटी हुई जीन्स स्टूडेंट्स पहने हुए. तो मैंने टेलर से पूछा कि आप ये स्टूडेंट्स जो है शेरवानी नहीं बनवाते? उन्होंने कहा साहब बहुत कम बनवाते हैं. महंगी पड़ती है? नहीं, महंगी नहीं. अच्छा. वो जैसे पहले साल में ही वो कटिंग होती है, उनको शेरवानी के लिए पैसे देने पड़ते हैं, मगर कहा कि अपने मेजरमेंट नहीं देखते और पहनते नहीं, और जब ग्रेजुएट हो जाते हैं तो अपना सूट बनवा लेते हैं. मैं हमेशा फॉर्मल ओकेजन्स पे हमेशा शेरवानी पहनता था, क्योंकि ये
पार्ट ऑफ AMU कल्चर है, और बिल्कुल उसको, और फिर उर्दू ज़बान बोलना, और मगर मैंने नोट किया कि बोल तो लेते थे मगर लिखते नहीं थे। हाँ। तो स्क्रिप्ट जो है वो दूसरी ज़बान में होती थी, उर्दू में नहीं। तो मैं देखता था स्टूडेंट यूनियन के जो ओहदेदार है बड़ी ज़बरदस्त स्पीचेस देते थे, मगर स्क्रिप्ट लिखे जी। तो मगर एक यूनिवर्सिटी को नंबर 1 बनाने के लिए, जो कि हमने आई हैड गिवन दैट कमिटमेंट when I took over, that we are going to be the best university in the country. Right. तो उसके लिए एक तो डिसिप्लिन, यूनिवर्सिटी का काम नहीं चल सकता अगर हर दूसरे तीसरे महीने में बंद हो जाए यूनिवर्सिटी और धरना हो जाए। होती नहीं धरना, मगर यूनिवर्सिटी 5 साल में एक दिन भी बंद नहीं हुई, तो ये फख्र की बात है। और दूसरा हमेशा इम्तिहान जो है वक्त पे हुए, टाइम पर हुए। और सबसे फख्र की बात यह है कि जो मेरा फाइनल ईयर एकेडमिक ईयर था 2016-17, तो इंटरनेशनल रैंकिंग एजेंसीज ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नंबर 1 यूनिवर्सिटी का ऑर्डर दिया। Oh my God. जी, we were number 1 university of the country, and I am very proud of the fact. In fact, I used to irritate a lot of people in the HRD by starting any talk by saying greetings from Aligarh Muslim University, the number 1 university of the country. Oh wow. So, but I used to rub it in that we are the best, and a university is known by the discipline and by the research it does. Right. So we concentrated, I thought in my mind, what is the research we should do? So the first thing we decided was food, shortage of food, cleaning the dirty water of the rivers. Right. So we concentrated on, I spoke to the Prime Minister and I said that we have a project for cleaning the Ganga, and we'll do it for, if you give us the responsibility, in 10 years, we'll clean the Ganga for you. And the plants which you have established, 110 plants, I said they're useless, they're gas guzzlers and they don't do the job. So here's a green technology, and I did give several presentations, but nothing, they didn't fructify. Then solar power, use of solar power, nanotechnology. These are the fields in which Aligarh Muslim University is number 1 in the country. Right. And that is the reason why international ranking agency is graded as number 1, top university of the country. Quality of research, discipline, and third. And you maintained all of this. And we did. So thank you so very much. बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप आए और आपने हमसे बातचीत की। अल्लाह हाफ़िज़ कहने से पहले मैं चाहूँगी कि आपका ख़ास मैसेज, आपका पैगाम FM107 के लिसनर्स के नाम। Yes, my message to you is that you are living in a great country. You are earning your bread and butter here. Do everything for the honor and glory of the country, Qatar, and the city where you live. Also, do not forget your own country. Your own country needs you. Your community needs you. India needs you. And if you are to help towards betterment of the cause of education, that is the best way, the best service you can provide to your country and to your community. Wow. Thank you so very much. बहुत शुक्रिया. It was a pleasure interacting with you. Thank you.